Good morning to all students. Students, today we are going to solve one more question of not for profit concern, and this question will be our last practice question of this chapter. Before that, before solving this question, we have solved almost 13 questions, practice question of not for profit concern. Now this is question number 12, page number 93 from our BK textbook. Let me read the question. Following is the receipt and payment account of Chamber of Commerce bid for the year ended 31st March 2018, and additional information, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date. Now here we have given receipt and payment account for the year ended 31st March 2018. Okay. Now our current year which is given for receipt and payment account, it ends on 31st March 2018. Okay. So our current accounting year will be, it ends on 18. So our current year will be 2017 and 2018. Okay. So here we will write our current year 2017 and 2018. Okay. So what will be our last year? हमारा करंट ईयर है 2017 and 18, तो हमारा लास्ट ईयर क्या होगा? We will go 1 year back, हम एक साल पीछे जाएंगे. So it will be 2016 and 2017. So last year will be 2016 and 17. Now we will read receipt and payment account and we will do the marking. Okay. First we will read receipts. Now here first opening balance is given of two balance brought down. It's opening balance of cash at bank rupees 22,250. Okay. Now this opening balance is closing balance of लास्ट ईयर. ये पिछले साल के बैलेंस शीट के असेट का क्लोजिंग बैलेंस था. ओके. एंड दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर. ओके. सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर कैश एट बैंक विच इज गिवन इन रिसिप्ट साइड. ओके. सो हियर वी हैव टू कैंसल ओपनिंग बैलेंस. हम ओपनिंग बैलेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, उसे कैंसल करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज subscription. It is given 72,000. Okay. Now in subscription, it includes rupees 8,000 for 2016 and 17. Okay. We have given subscription rupees 72,000 during the current year. हमारे current year का subscription है 72,000. Okay. But it includes rupees 8,000 for 16 and 17. Now 2016 and 17 is our last year. Okay. हमें जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का मिला है 72,000, उसके अंदर लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड था या इंक्लूड है 8,000 रुपीज. ओके. सो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर विल बी, हम पहले करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला है वो काउंट करेंगे. ड्यूरिंग द ईयर हमें 72,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है. ओके. उसके अंदर 8,000 लास्ट ईयर का इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर का 8,000 लेस करेंगे. ओके. सो 72,000 माइनस 8,000 इट विल बी 64,000 फॉर दी करंट ईयर. सो हमारे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 64,000. ओके. सो दिस सब्सक्रिप्शन वी विल शो इन इनकम साइड बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज अवर रिकरिंग इनकम. It is our revenue income. Okay. So it will be transferred in income side. Now in subscription of rupees 72,000, 8,000 is related with last year. पिछले साल का या लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 8,000 रुपीज. ओके. लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिला था वो हमें इस साल रिसीव्ड हो गया है, वो अमाउंट है 8,000 रुपीज. ओके. Now next is sale of furniture. Okay, so sale of machinery.
book value rupees 25,000. Now during the year we have sold one machinery and book value of machinery is rupees 25,000 and it is sold for rupees 20,000. ओके, हमने एक मशीनरी को सोल्ड किया है जिसका बुक वैल्यू था 25,000 रुपीज. नाउ व्हाट इज बुक वैल्यू? वैल्यू ऑफ असेट विच इज शोन इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के अंदर असेट की जो हम वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं उसे कहा जाता है बुक वैल्यू. जनरली ऑल असेट्स आर मेंटेन at their book values in the balance sheet. So we have sold machinery of book value rupees 25,000 for rupees 20,000. 25,000 के बुक वैल्यू का हमने मशीनरी को बेचा है या सोल्ड किया है 20,000 में. So there is a loss of rupees 5,000. हमारा एक मशीनरी था जिसका बुक वैल्यू था 25,000 रुपीज. ओके, and we have sold that machinery for rupees 20,000. 25,000 का कोई चीज जिसकी कॉस्टिंग है 25,000 उसे आप 20,000 में बेचोगे, 20,000 में बेचोगे, so there will be a loss of rupees 5,000. Okay, so it's a hidden adjustment. We have to show two effects for this. Okay, because book value is given 25,000 rupees. So जो बुक वैल्यू की मशीनरी हमने सोल्ड की है, बेची है, वो हम असेट में जाके लेस करेंगे. ओके, बिकॉज वी हैव सोल्ड दी मशीनरी. मशीनरी बेचा है तो आपको असेट में जाके वो क्या करना होगा? लेस करना होगा. उसकी बुक वैल्यू 20,000 हमें 25,000 लेस करनी है. एंड सेकेंड इफेक्ट, वी हैव गॉट अ लॉस ऑफ रुपीज 5,000. वी हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 5,000. हमें 5,000 का लॉस हुआ है मशीनरी बेचने के बाद. So that effect we will show in expenditure side. Okay, so here we will do two arrows. Okay, first effect we will show in asset side. asset में जाके आप बुक वैल्यू माइनस करोगे. जो मशीनरी हमने सोल्ड किया था उसका बुक वैल्यू था 25,000 रुपीज, वो हमें लेस करना है. एंड लॉस ऑफ 5,000 रुपीज we will show in expenditure side. Okay, so this is how we have to show two effects for sale of machinery, because here information is given in bracket. It's a hidden adjustment. Okay, now next is donation. Now donation we will transfer in income side. Okay, now in bracket if it is given capitalize, then we have to transfer donation in liability side. Okay, but nothing is given, then we will transfer that donation in income side. Okay, so here we will write I for donation. Admission fees in bracket they have mentioned revenue. Admission fees हमें revenue purpose के लिए मिला है, so it's our revenue income and that's why we will show it in income side. Okay, capital mention क्या होता तो हमें उसे liability में show करना पड़ता था. Okay, but here clearly specify that admission fees is received for revenue purpose, so we will show admission fees in income side. Okay, so here we will write I. Now next, payment side. First is insurance. Insurance is a revenue payment, recurring payment, so it will be transferred to expenditure side. Next is printing and stationery. It is also recurring expenditure, so it will be transferred to expenditure side. ये हमारा revenue payment है, revenue expenditure है. Books are asset. Books are asset for not for profit concern, so it will be transferred to asset side. Computer is also asset, so it will be transferred to asset side. Next is traveling expenses. Traveling expenses will be transferred to expenditure side, because these are revenue payments for not for profit concern. Next is furniture. Now furniture is asset. It's a capital expenditure. Okay, any expenditure which is made on creating asset. asset को purchase करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे कहा जाता है capital expenditure, and that's why purchase of furniture during the year we will show in asset side. Okay, and here next is balance carried down, cash at bank. Now that closing balance of cash at bank
we will show in asset side. Okay. Now we will read additional information. Additional information number 1, assets and liabilities on 1st April 2017. Now these are the assets and liabilities of 1st April 2017. 1st April 2017 means opening balances. Now these are the closing balances of last year. ये पिछले साल के closing balances थे, okay? जो current year के opening balances हो चुके हैं, and that's why date is given 1st April 2017, okay? So हमारा last year जो होगा वो होगा 2016 and 17, okay? Because our current year is 2017 and 18, okay? So last year will be 2016 and 17, okay? So these are opening balances of current year. That means these are closing balances of last year balance sheet. ये पिछले साल के balance sheet के closing balances है, okay? Now first is outstanding subscription. Last year का outstanding subscription है 10,000 rupees. Then machinery rupees 50,000 and building fund amounting to rupees 2,10,000. So these are the assets and liabilities of previous year or last year. Okay. One more balance is given, investment rupees 3 lakh. Okay. So these are assets and liabilities of last year or previous year. First, outstanding subscription. Outstanding subscription we will show in asset side of last year. ये पिछले साल का या last year का asset होगा, because outstanding subscription means income receivable. ये पिछले साल का subscription मिलना बाकी था, तो हम इसे asset side में रिकॉर्ड करेंगे last year के. Okay. Next, machinery. Machinery we will show in asset side. Building fund we will show in liability side, and investment we will show in asset side. Okay. Next adjustment number 2, depreciate furniture by rupees 2,500. Now there is depreciation on furniture, so we will give, there is depreciation on machinery, so we will give number 2 to the machinery. Now here machinery is not given, okay? So during the year we have not purchased any machinery, but opening balances, here opening balance of machinery is 50,000, okay? Machinery का opening balance दिया हुआ है 50,000, and there is depreciation on machinery rupees 2,500, okay? So there is adjustment on machinery which is related with second adjustment. Adjustment number 3, donation received for building fund. Now here we have received donation of rupees 55,000, okay? And that donation is received for building fund. So here we will write adjustment number 2, okay? That amount of 55,000 which is related with donation is received for building fund, okay? We will discuss that adjustment later on. हम इसे बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. Adjustment number 4 is outstanding subscription for current year was due for rupees 6,000. Now during the current year there is outstanding subscription of rupees 6,000. So we will give number 4 to the subscription. Okay. So adjustment number 4 is related with subscription. So in this question 4 additional information are given. Now most important thing in this question is information about capital fund is not given. You can see here. इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो कैपिटल फंड आपको दिखाई नहीं देगा. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन. अगर क्वेश्चन के अंदर हमें कैपिटल फंड नहीं दिया है तो हमें क्या करना होगा. So in that situation, we have to prepare balance sheet of last year to find out capital fund. Okay. Now, first of all, we have to record all assets of last year, and from all assets,
or total of all asset we have to minus total of all liabilities, then we will get capital fund. Okay, इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फंड कहां पे भी नहीं दिया है. ओके, सो ऐसे सिचुएशन में कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए हमें वर्किंग नोट में कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करना होगा. तो ये कैपिटल फंड हम लास्ट ईयर का कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर के जितने सारे असेट्स हैं उसके टोटल से हम प्रीवियस ईयर के या लास्ट ईयर के लायबिलिटीज के टोटल को लेस करेंगे. ओके, सो टोटल ऑफ असेट्स ऑफ लास्ट ईयर माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटीज ऑफ लास्ट ईयर इज इक्वल टू कैपिटल फंड. पिछले साल के असेट के टोटल से हम लायबिलिटीज को लेस करने के बाद जो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, जो डिफरेंस मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल फंड कहेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर फॉर फाइंडिंग आउट कैपिटल फंड. ओके, सो हियर आई हैव प्रिपेयर्ड वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड. सबसे पहले हम कैपिटल फंड का कैलकुलेशन करेंगे. ओके, नाउ दिस इज बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017. ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है. ओके, विच वाज क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ लास्ट ईयर. फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट या पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्यों प्रिपेयर कर रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फंड को नहीं दिया हुआ है. ओके, सो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है. नाउ हियर वी विल राइट ऑल असेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज ऑफ लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी रिसीप्ट साइड एंड पेमेंट साइड. ओके, पिछले साल का असेट्स या लायबिलिटी हमें रिसीप्ट साइड में या पेमेंट साइड में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, वो फाइंड आउट करना है. नाउ हियर वी हैव गिवन two balance brought down. It's a opening balance of cash at bank rupees 22,250. ये लास्ट ईयर के असेट का ओपनिंग बैलेंस है जो हमने रिसीप्ट साइड में लिखा है. ओके, सो दैट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक कम्स फ्रॉम लास्ट ईयर बैलेंस शीट. ओके, ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से हमने रिकॉर्ड किया. सो दैट वी विल शो इन असेट साइड. ओके, क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो करंट ईयर का होता है. ओके, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का. और ओपनिंग बैलेंस जो है वो लास्ट ईयर का होता है. सो इन असेट साइड वी विल राइट कैश एट बैंक, इट इज रुपीज 22,250. Now here कैश एट बैंक को छोड़ के लास्ट ईयर का हमें इस क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया है. ओके, सो ओनली वन ओपनिंग बैलेंस इज गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दैट इज कैश एट बैंक. नाउ इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, वी हैव गिवन opening balances of assets and liabilities of last year. Okay, opening balances of assets and liabilities we are given in adjustment number 1. First is outstanding subscription rupees 10,000. Now ये last year का outstanding subscription था. Okay, so we will record that outstanding subscription in asset side of the balance sheet of last year. Okay, so here we will write outstanding subscription. Amount of outstanding subscription of last year is rupees 10,000. Then machinery rupees 50,000. Last year की हमारे पास machinery है 50,000, so it is our asset. So in asset side we will write machinery 50,000. Next is
बिल्डिंग फंड वी विल राइट इन लाइबिलिटी साइड. ओके, ये लास्ट ईयर का बिल्डिंग फंड था. बिल्डिंग फंड हमारी लाइबिलिटी है. ओके, सो वी विल राइट बिल्डिंग फंड इन लाइबिलिटी साइड ऑफ लास्ट ईयर. Amount of building fund is given 2,10,000. Next is investment. Now investment of last year we will show in asset side. Okay, so here we will write investment. Amount is 3 lakhs. Now adjustment number 2, adjustment number 3 and adjustment number 4 are related with current year. Okay, so from receipt and payment account and additional information we have recorded assets and liabilities of last year. Okay, now first of all we will do total of asset side. Okay, and from total of asset side we will minus total of liability side. Okay, and then we will get capital fund. Okay, so total of asset side of last year is 3,82,250 माइनस असेट साइड के पिछले साल के लास्ट ईयर का असेट साइड का टोटल था 3,82,250 माइनस टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज 2,10,000. So 3,82,250 is a total of asset side minus total of liability side is 2,10,000. So difference will be capital fund. Okay, लास्ट ईयर के असेट से लाइबिलिटी का टोटल हमें लेस करना है. So जो डिफरेंस हमें मिलेगा that will be the liability fund of capital fund of last year. So capital fund will be 1,72,250. So here we will write the difference. असेट के टोटल से लाइबिलिटी का टोटल लेस करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है, ओके, इन लाइबिलिटी साइड दैट विल बी कैपिटल फंड. सो हियर वी विल राइट कैपिटल फंड. अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड इज 1,72,250. okay, we will underline it. This is balancing figure, this is the difference, okay, from asset minus liabilities of last year. Okay, so this is how we have prepared opening balance sheet, that means balance sheet of last year, to find out amount of capital fund. Okay, so अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है तो आपको लास्ट ईयर का क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. लास्ट ईयर के असेट के टोटल से लाइबिलिटी का टोटल आपको माइनस करना है. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस. हमें जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं उसकी हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे. ओके, नाउ कैपिटल फंड व्हिच इज गिवन इन लायबिलिटी साइड वी विल ट्रांसफर टू करंट ईयर बैलेंस शीट इन लायबिलिटी साइड. ये करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना है, दैट इज 1,72,250. सो हियर वी विल राइट कैपिटल फंड. In inner column we will write 1,72,250. Then building fund we will transfer in liability side of the current year. Okay, so here we will write building fund. We will write building fund in inner column because there is adjustment number 3 is related with building fund. building fund के ऊपर adjustment है.
That's why we will show this amount in inner column, 2,10,000. Now next is cash at bank. Okay, now it's a closing balance of cash in hand. We will transfer in receipt side. हमें receipt side में transfer करना होता है. Okay, and that's why we are not going to consider closing balance of cash at bank which is given in last year balance sheet. उसकी हमें posting नहीं करनी है क्योंकि already हमने उसे receipt and payment account में receipt side में post किया है. Okay, so we will cancel it. Now next is outstanding subscription of last year is rupees 10,000. Last year का outstanding subscription था 10,000 and during the current year we have received 8,000 rupees. Current year का हमें subscription मिला है 72,000. Okay, जिसके अंदर 8,000 rupees कौन सी year का था? Last year का था. Okay, आप देख सकते हो यहाँ पे as per last year balance sheet we are having outstanding subscription 10,000. हमें outstanding subscription मिलना बाकी था 10,000. Okay, और करंट ईयर में हमें रिसीव्ड हो चुका है 8,000 रुपीज. ओके, सो बाकी मिलना कितना है 2,000 रुपीज. ओके, सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर विल बी नाउ 2,000 रुपीज दैट वी विल शो इन asset side of current year. Okay, so here in asset side we will write outstanding subscription of LY. LY means last year 2016 2017. As per last year balance sheet it was rupees 10,000. वो था 10,000 rupees. Okay, and during the current year we have received 8,000 rupees. current year में हमें मिल चुका है 8,000 rupees. Okay, so outstanding subscription for last year will be now 2,000 rupees. We will show that amount in outer column. Okay, now here next is machinery 50,000 rupees. We will write that machinery in asset side. Okay, so machinery of last year we will show in current year balance sheet. Amount of machinery is rupees 50,000. Now there is hidden adjustment on machinery. There is one adjustment on machinery. Okay, so machinery के ऊपर machinery के बाद हमें 4 लाइन छोड़ने हैं, लीव करने हैं. Okay, because one hidden adjustment is related to machinery is there. Okay, and adjustment number second depreciation is related with machinery. Okay, next is investment rupees 3 lakhs. Okay, so in asset side we will write investment. Now investment of last year we will write in asset side. Now as per last year balance sheet we are having investment of rupees 3 lakhs rupees. पिछले साल के बैलेंस शीट के मुताबिक हमारे पास इन्वेस्टमेंट था 3 lakh rupees. Okay, now here during the current year we have not purchased any investment. आप पेमेंट साइड में देख सकते हो कि करंट ईयर में ये हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट को परचेज नहीं किया है. ओके, सो वी विल राइट दैट अमाउंट इन आउटर कॉलम. ओके, बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट इज गिवन ऑन इन्वेस्टमेंट and that's why we will show that amount in outer column rupees 3 lakhs. Okay, so this is how we have done posting of balances of assets and liabilities of last year. Okay, now we will solve adjustment one by one. Okay, first adjustment we have already solved. लास्ट ईयर के जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे उसकी हमने यहाँ पे पोस्टिंग की है. ओके, कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए एंड देन लास्ट ईयर के जो बैलेंसेस थे वो हमने करंट ईयर में ट्रांसफर किए हैं. ओके, नाउ एडजस्टमेंट नंबर 2 depreciate machinery by rupees 2,500. now there is depreciation on machinery, but before that we can see here that adjustment number 2
sorry, adjustment number 2 is given on machinery. Actually here we will write adjustment number 2. adjustment number 2 जो है वो मशीनरी से रिलेटेड है, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है मशीनरी के ऊपर. बट ड्यूरिंग द करंट ईयर वी हैव सोल्ड मशीनरी बुक वैल्यू ऑफ ₹25,000 फॉर ₹20,000. ओके, हमने करंट ईयर में 25,000 का मशीनरी 20,000 में बेचा है. ओके, सो देयर इज लॉस ऑफ ₹5,000. 25,000 माइनस 20,000, 25,000 का आपका मशीनरी 20,000 में बेचोगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा. दैट लॉस वी विल शो इन एक्सपेंडिचर साइड फर्स्ट. ओके, so here in expenditure side we'll write 2 loss on sale of machinery. 25,000 was book value of machinery minus it is sold for ₹20,000. मशीनरी को बेचा है हमने 20,000 में, so loss will be ₹5,000 on sale of machinery. Now one more effect we have to give. एक और इफेक्ट हमें देना है because there is hidden adjustment. Additional information is given in bracket, that is called hidden adjustment. Now book value of machinery which is sold was ₹25,000. हमने जिस मशीनरी को सोल्ड किया है 20,000 में, उसका बुक वैल्यू था ₹25,000. Okay, so we have sold a machinery having book value of ₹25,000. Okay, now already we are having machinery of ₹50,000. हमारे पास लास्ट ईयर के मुताबिक मशीनरी था 50,000 का, जिसका बुक वैल्यू था 50,000. Okay, now during the current year we have sold machinery having book value of ₹25,000. हमने मशीनरी करंट ईयर में बेचा है. So that's why मशीनरी सोल्ड किया, इसके लिए हमें वो क्या करना होगा, एसेट में जाके लेस करना होगा. ओके, सो हियर वी विल राइट लेस मशीनरी सोल्ड. ओके, एंड हियर वी विल राइट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड, दैट इज रुपीज. बुक वैल्यू था ₹25,000 जिसे हमने बेचा है, तो हमें वो लेस करना होगा. ओके, as per last year balance sheet we are having machinery of ₹50,000. during the current year we have sold machinery of book value of ₹25,000. मशीनरी को बेचा है तो अमाउंट आपको क्या करना होगा, लेस करना होगा. so remaining amount of machinery during the current year will be 25,000 now. Okay, now we will solve adjustment number 2. depreciate machinery by ₹2,500. Now there is depreciation on machinery, so we will minus depreciation from machinery in asset side. Okay, so less depreciation, amount of depreciation is given 2,500. Okay, so remaining amount will be 22,500. Okay, first effect of depreciation on machinery we have shown in asset side. Second effect we will show in expenditure side because depreciation is a loss. Okay, so loss or depreciation we will show in expenditure side. So here we will write 2 depreciation on machinery. Amount of depreciation is given 2,500. Okay, so this is how we have solved adjustment number or additional information number 2. Additional information number 3 is donations received for building fund. Now here we have received donation of ₹55,000. Okay, and that donation is received for building fund. Okay, now we have received donation for building fund. That means donation is received for specific purpose. Donation is received for special purpose, and that means it's a capital revenue. अगर कोई भी इनकम हमें स्पेशल पर्पस के लिए मिलता है, ओके, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है, तो उसका इफेक्ट हमें कहाँ शो करना है,
लाइबिलिटी साइड में शो करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will write donation in income side, that is rupees 55,000. we will write by donation. donation का अमाउंट था 55,000 जो हमने इनकम साइड में शो किया है. बट as per adjustment number 3 we have received donation for building fund, that means it is not a revenue receipt. donation हमारी revenue receipt नहीं है, क्योंकि वो किस पर्पस के लिए मिला है, बिल्डिंग फंड के लिए मिला है, बिल्डिंग को फ्यूचर में क्रिएट करने के लिए मिला है, बिल्डिंग बनाने के लिए मिला है. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी आवर लायबिलिटी, इट इज नॉट आवर इनकम. सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ डोनेशन टू द बिल्डिंग फंड. हम क्या कर रहे हैं, डोनेशन को बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट विल बी लेस फ्रॉम इनकम साइड, हम डोनेशन को नील करेंगे. सो लेस, हियर वी विल राइट रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड. ये जो हमें डोनेशन मिल रहा है 55,000 रुपीज, वो बिल्डिंग फंड के लिए है. सो वो हमें लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करना है, बिल्डिंग फंड में ऐड करना है. ओके, सो इनकम साइड से वो लेस हो जाएगा. So we will transfer entire amount of rupees 55,000. So outer column we will write nil. Okay. So income side में जो donation था वो अब क्या हो जाएगा, nil हो जाएगा, क्योंकि हमने उसे building fund के लिए ट्रांसफर किया है. So here we will add donation because that donation is received for building fund purpose. ये हमें donation building fund के लिए मिला है. So we will add this amount 55,000 rupees. Now total amount of building fund will be 2,65,000 rupees. Okay, अब हमारा building fund का amount है 2,65,000 rupees और रिसिप्ट इनकम साइड का हमारा डोनेशन अब नील हो चुका है. Okay, now adjustment number 4 is outstanding subscription for current year was rupees 6,000. now current year का हमारा outstanding subscription कितना है, 6,000 rupees है. Okay, so what effect we will do or we will show, first of all outstanding subscription of current year we will add in income side. हम income side में जाके current year का outstanding subscription क्या करेंगे, add करेंगे. Okay, and second effect we will show in asset side. Okay, so this is outstanding subscription of current year rupees 6,000. Okay, now during the current year we have received subscription of rupees 72,000. So here in income side we will write by subscription received during the current year. हमें current year में subscription मिला था 72,000 rupees. Okay, which includes rupees 8,000, जिसके अंदर 8,000 rupees कौन सी ईयर का था, 16 and 17. 2016 and 17 is our last year. Okay, last year का outstanding subscription था 10,000. Okay, उसमें से हमें current year में रिसीव हो चुका है 8,000. So that amount of rupees 72,000 includes subscription of rupees 8,000 of last year. 72,000 में पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है 8,000 रुपीज, जो हमें इनकम साइड में क्या करना होगा, लेस करना होगा. बिकॉज वी रिकॉर्ड ओनली सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इन इनकम साइड. हमें इनकम साइड में ओनली करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करना है. ओके, लास्ट ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है करंट ईयर के अंदर तो वो हमें लेस करना है, माइनस करना है. सो लेस subscription for last year it is rupees 8,000. लास्ट ईयर का जो इंक्लूड था सब्सक्रिप्शन वो हमने करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में लेस किया. दैट मींस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर विल बी नाउ 64,000. ये हमारे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है. ओके, नाउ एडजस्टमेंट नंबर 4
is related with outstanding subscription for current year is rupees 6,000. Current year का outstanding subscription है 6,000 rupees. Okay, so that we will add in income side. Okay, first effect we will show in income side. So here we will write add outstanding subscription of current year. It is rupees 6,000. So total will be now 70,000. Now second effect of outstanding subscription of current year we will show in asset side. Current year का जो outstanding subscription है, outstanding income है, उसका effect हमें second effect हमें कहाँ show करना है? Asset side. So in asset side we will write outstanding subscription of CY current year, which is rupees 6,000. Okay, so this is how we have solved all four additional information which are given in the question. Now we will do posting of receipt and payment account. Now first is opening balance. We are not going to consider opening balance of cash at bank for current year. Subscription already we have solved. Adjustment number 4 on subscription. Then to sale of machinery there was adjustment number 2 on sale of machinery. We have already solved that adjustment. Donation we will transfer in. There was adjustment number 3 on donation. Donation के ऊपर adjustment number 3 था. Already we have solved adjustment number 3 on donation. Okay. Then admission fees that is received for revenue purpose. Okay, so we will show admission fees in income side. Okay, so here we will write by admission fees in income side. Amount of admission fees received is rupees 6,000. Okay. Now posting of receipt side is done. Now we will do posting of payment side. First is insurance, 10,000 rupees. We will show in expenditure side. So here we will write to insurance. Amount of insurance is rupees 10,000. Next is printing and stationery. We will show in expenditure side. It is rupees 4,000. Next is books. We will show in asset side 30,000. After books, computer purchased during the year is rupees 60,000. We will show in asset side. Okay, so during the current year we have purchased two asset. Current year के अंदर हमने दो asset को purchase किया है. एक था computer और दूसरा था books. Next is traveling expenses. Traveling expenses we will show in expenditure side. So here we will write to traveling expenses. Amount of traveling expenses are given 4,000. Next is furniture. Furniture purchased during the year is 62,000. Current year में हमने 62,000 का furniture purchase किया. That is our asset. So here we will write furniture. Amount of furniture is given 62,000. Next is closing balance of cash at bank during the current year. Okay, it will be transferred in asset side. Rupees 5250. So here we will write cash at
bank 5250. Okay, so this is how we have done posting of receipt and payment account. Now we will close income and expenditure account. First of all, we will do total of income side. Now total of income side looks like greater than total of expenditure side. Okay, income का total expenditure से ज्यादा दिख रहा है. Okay, so we will close income side first. Now total of income side is 76,000. So here we will write total of income side 76,000. Okay, we will do rough calculation. Income is total of income is 76,000 minus total of expenditure side. Now total of expenditure side is 25,500. Okay, so total of expenditure side we will write 25,500. So income minus expenditure or total of income side minus total of expenditure side will be surplus. Okay, income का total ज्यादा है, expenditure का total कम है. Okay, so surplus will be 50,500. Okay, so 76,000 we will write in both side. Now total of income is 76,000 minus total of expenditure is 25,500. So there will be difference in debit side. Debit side में difference होगा. There will be difference in expenditure side. So that will be called as a surplus. Income minus expenditure is our surplus. So here we will write surplus to surplus. Amount of surplus is 50,500. Okay, and that surplus we will add in capital fund. Okay, because surplus is a positive balance. Okay, so add surplus 50,500. So total of capital fund will be 2,22,750. Now we will do total of liability side. Total of liability side is 4,87,750. Okay. Now total of asset side is also equal. It is rupees 4,87,750. Okay. So this is how total of both side, asset side and liability side of balance sheet are tallied now. Okay. दोनों का total equal है. Okay. So this is how we have solved one more question of not for profit concern, that is question number 12, page number 93. Now what is the speciality of this question? इस question की खासियत क्या थी? In this question capital fund balance is not given. Capital fund का balance नहीं दिया हुआ था. Okay, and that's why we have prepared closing balance sheet. Sorry, we have prepared balance sheet of last year, which is called opening balance sheet of current year. Okay, to find out amount of capital fund. Okay, thank you so much for watching my video.